So today we will discuss about BPaLM regimen. Okay, BPaLM regimen in the treatment of multi-drug resistance slash rifampicin resistant tuberculosis. So today we will only focus on BPaLM regimen. So when we start the treatment of any drug resistant tuberculosis, we keep in mind following things. We keep in mind family history, treatment history, severity of the disease, risk of any adverse event, clinical assessment, site of the disease, patient's preference, and also consider the drug sensitivity test. Okay, and at the time before the initiation of treatment, we should follow the guidelines of Central TB Division, and all treatment should be delivered as per the standards adopted by NTEP, National Tuberculosis Elimination Program. Okay, when we talk about drug resistant tuberculosis, there are mainly four options available: 6 to 9 months BPALM shorter oral regimen, 9 to 11 months shorter oral MDR or rifampicin resistant tuberculosis regimen, 18 to 20 months longer oral MDR or XDR TB regimen, and 6 to 9 months H mono slash polydrug resistant tuberculosis regimen. These are the four options available. And if we talk about MDR and slash rifampicin resistant tuberculosis, these three options are available. Okay, now coming to the, if we are treating MDR or rifampicin resistant TB, there are three options in the order, that is BPaLM regimen will be given first, then 9 to 11 months shorter oral regimen will be given second, and 18 to 90 months 18 to 20 months longer oral regimen will be preferred, the third option. Okay, so what is BPaLM regimen? BPaLM is BPaLM. B stands for bedaquiline, which is diaryl quinoline. What is mode of action is it inhibits mycobacterial ATP synthase. Second is pretomanid. Pretomanid is nitroimidazole inhibits inhibits mycolic acid biosynthesis, ब्लॉक्स माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल प्रोडक्शन, ये सेल वॉल पे अटैक करता है, सेल वॉल प्रोडक्शन पे अटैक करता है, एंड act as respiratory poison against non-replicating bacteria after nitric oxide release under anaerobic conditions. So pretomanid is only approved for BPaLM regimen. There is no other place where pretomanid is used now. Okay, linezolid is oxolinidone that disrupts protein synthesis. Moxifloxacin inhibit DNA synthesis. We know it is as a fluoroquinolone. Okay, so this slide shows the integrated diagnostic and treatment algorithm for drug susceptible and resistant tuberculosis. So here we will only focus about how a patient is eligible for BPaLM regimen. We will not discuss all the algorithm here. We have made a separate video for that algorithm, so we will discuss it there. So whenever a TB patient is notified, okay, or a presumptive TB patient is identified with abnormal X-ray with or without symptoms, or a non-responder to any regimen, we collect two samples, we send it for resistance for rifampicin isoniazide, fluoroquinolone or other drugs as needed. Then if the patient is detected with rifampicin resistance, okay, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव डिटेक्ट होने के बाद अगर रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट डिटेक्ट होता है, and if the patient meets the eligibility criteria for BPaLM regimen, that is greater than or equal to 14 years
and eligible for BPaLM regimen. What is the eligibility we will discuss in the later slides. Then we will give the patient BPaLM regimen. What is the duration of this regimen is 6 to 9 months. Okay, shorter oral regimen, short oral. So whole algorithm we will discuss in separate video. Coming to the inclusion and exclusion criteria, let us first see inclusion criteria. The person should be age of 14 years and above and microbiologically confirmed, whether through NAT or microbiologically through microscopy, any other means. हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर अगर उसका प्रीवियस ट्रीटमेंट लेस देन 1 month intake of bedaquiline, linezolid or pretominid in the past, more than 1 month intake of bedaquiline but द ड्रग इज शोइंग सेंसिटिविटी, ये तीनों ड्रग्स जो हैं अभी भी सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं. पर्सन हु हैज़ नॉट फेल्ड, अगर प्रीवियसली कोई ट्रीटमेंट नॉट फेल्ड ट्रीटमेंट अगर उसने BPaLM में लिया हुआ है और शॉर्टर और लॉन्गर रेजिमेन, देन एंड स्टिल शोइंग सेंसिटिविटी अभी भी प्रेजेंट है. ओके, देन वी कैन, हिस्ट्री होने के बाद भी हम लोग उसको ड्रग दे सकते हैं. व्हाट इज़ द inclusion criteria? अगर QTCF in ECG is less than 450 milliseconds in male and less than 470 milliseconds in male, तो हम उसको BPaLM regimen दे सकते हैं. अगर QTCF is more than 450 millisecond in males and QTCF is more than 760 millisecond in females, then what we will do is that if we will do इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन करने के बाद अगर QTCF नॉर्मल रेंज में आ जाता है, देन वी कैन गिव BPaLM regimen. हु आर मोर और ऑल्सो इंक्लूडेड नॉन लैक्टेटिंग वुमेन है, तो अगर वो नॉन ब्रेस्ट फीडिंग है, नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट अगर वुमेन है विथ 20 और 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन हु इज़ विलिंग फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन जो 24 वीक्स से कम है जिसका गेस्टेशन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए वो एग्री है, तो अपन उसको BPaLM regimen दे सकते हैं. Let's now discuss about the exclusion criteria for BPaLM regimen. Those people who are below 14 years के छोटे, those persons have documented resistance to bedaquiline or linezolid or pretominid. Persons with significant liver dysfunction किसको बोलते हैं? If the liver enzymes or total bilirubin, liver enzymes या total bilirubin अगर 3 times अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल है तो उसको बोलते हैं. ओके, इफ पीपल विथ सीवियर फॉर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी MDR TB, देन वी कैन कीप इट इन द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया. ये सीवियर फॉर्म कौन कौन से होते हैं? CNS TB, स्पाइनल और स्केलेटल TB, डिससेमिनेटेड TB जिसे मिलियरी TB भी कहा जाता है, तो हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं. Significant cardiac conduction abnormalities such as structural heart disease, syncope, long QT syndrome, AV block, re-entry arrhythmias, etc., where QTCF is above 500. Okay, normally when in males less than 450 है and if females less than 470 है, तो we keep it under the inclusion criteria. और overall स्टार्टिंग में ही QTCF अगर मोर देन 500 है तो वी विल एक्सक्लूड द पेशेंट. ओके, whenever there is QTCF is above the higher normal level, acceptable level, then what we do is that electrolyte correction हम हमेशा करते हैं. So whenever after electrolyte correction, if the level comes between below the 450 in males and below the 470 in females, then we give the patient. And if even after correction it does not comes to those level, we will exclude the patient from BPaLM regimen. What points we have to remember before the start of the treatment is that if
the baseline serum chemistry panel, hematology or urine analysis are outside the normal reference range, okay, as mentioned above, then if the physician judges that the treatment will do good and the patient can tolerate the treatment, okay, then we can give the patient with the treatment. But before starting with these drugs, hypokalemia, hypomagnesemia and hypocalcemia should be corrected because before giving QTC prolonging drugs, okay. So what pre-treatment evaluation we will do, okay. This will include clinical evaluation as well as laboratory based evaluation. So history, physical examination about alcohol, substance abuse, drug use, family planning methods, previous history of anti-tubercular drugs, especially beta-aquiline, pretominid or delaminid, linezolid, more exposure की हिस्ट्री हो, क्लिनिकल थॉरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, न्यूट्रिशनल असेसमेंट करेंगे, मेनली हाइट, वेट, बीएमआई, न्यूरोलॉजिकल इवेल्युएशन, हम देखेंगे कि न्यूरोपैथी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है इस ट्रीटमेंट से। ऑप्थेल्मिक इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि विजुअल एक्यूटी, कलर विजन टेस्ट ये इफेक्ट होता है ड्यू टू दिस ट्रीटमेंट। व्हाट लैब बेस्ड इवेल्युएशन वी विल डू, आरबीएस, एचआईवी, कंप्लीट ब्लड काउंट। देखो एचआईवी, शुगर, ये कंपलसरी टेस्ट हैं फॉर ऑल ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स, ओके। लीवर फंक्शन टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बिकॉज एमटीपी वाला एंगल आ जाता है, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, ओके। सो दीज आर द लैब इन्वेस्टिगेशंस वी विल डू फॉर दिस पेशेंट्स। सो व्हाट आर द रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अगर इनहिबिटर्स या इंड्यूसर ऑफ साइटोक्रोम P50 ऐसा कोई ड्रग्स दे रहे हैं, कोई ड्रग जो क्यूटी इंटरवल को इफेक्ट करता है, मोस्ट मैनी एंटी फंगल्स, एंटी एरिथमिक्स, एंड ऐसा कोई ड्रग जो सीरोटोनिन लेवल को बढ़ाता हो, माओ इनहिबिटर्स पे है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। एंटी डिप्रेसेंट्स में है, ओके। ऐसा कोई ड्रग जो माइलो सप्रेशन इंड्यूस करता है, बिकॉज हमारा जो ड्रग है बीटाक्विलिन वो आपका आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि ये बोन मैरो सप्रेशन भी करता है। सो ओरल मैग्नीशियम कंटेनिंग सब्सटेंसेस जैसे मैग्नीशियम ट्राइसिग्नेट, इसमें हमको ध्यान रखना है ना। सो सीवियर एनीमिया के पेशेंट्स में जहाँ हीमोग्लोबिन लेस देन 8 है, प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 लाख है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट लेस देन 750 mm³ है ना। एबनॉर्मल हिपैटिक फंक्शन जैसे कि AST एंड ALT ग्रेटर देन 3 है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सिम्टम, लिवर डिसीज, और टोटल बिलिरुबिन ग्रेटर देन 2.0 है, ये सब रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। एबनॉर्मल रीनल फंक्शंस एंड सीरम क्रिएटिन ग्रेटर देन 3 times ऑफ द अपर नॉर्मल लिमिट है। एंड देन ओविंग टू द ओके सीवियर न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी ग्रेड 3 और ग्रेड 4, ये सब रिलेटेड। Now coming to the regimen, dosage and administration. See, BPaLM regimen is taken orally with adequate amount of food and water. Okay, so minimum duration of this regimen is 26 weeks and maximum duration is 39 weeks. कौन से सिनेरियो में 26 से हम 39 वीक्स कर देते हैं, ये हम आगे देखेंगे। सो व्हाट इज़ द डोसेज ऑफ बीडाक्विलिन? बीडाक्विलिन वीक 1 से 2, फर्स्ट 2 वीक्स में 400 मिलीग्राम्स वंस डेली, एंड वीक 3 से 26 तक या 39 तक हम लेते हैं 200 मिलीग्राम 3 times a week। फर्स्ट 14 डेज में 400 मिलीग्राम पर डे, एंड अप टू आफ्टर 3 weeks टू 26 या 39 वीक्स में हम 200 मिलीग्राम 3 times पर वीक, ओके। सो प्रिटोमिनिड का डोज है 200 मिलीग्राम डेली, लिनाजोलिड का डोज है 600 मिलीग्राम वंस डेली, मोक्सिफ्लॉक्सासिन का डोज है
400 milligram once daily. So देयर विल बी नो वेट बैंड्स, एक बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कोई वेट बैंड वाला ट्रीटमेंट नहीं है बीपाम रेजिमेन में। अगर कोई पेशेंट अबव 14 ईयर्स है और अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो ऑल विल रिसीव सेम डोज। ओके, सो देखो, बीपाम रेजिमेन हैज़ सिग्निफिकेंट इंसिडेंस ऑफ न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ पे पायरिडॉक्सिन देते हैं एज पर वेट बैंड। पायरिडॉक्सिन को वेट बैंड के हिसाब से देंगे। सो 16 to 29 kg patient will receive 50 milligram, 30 to 45 kg patient will receive 100 milligram and so on, similar to 170 kg से अगर अबव है तो 100 milligram. So इंसिडेंस ऑफ न्यूरोपैथी को कम करने के लिए वी विल गिव पायरिडॉक्सिन, ओके, ओरली। एंड डोज रिडक्शन ऑफ लिनोजोलिड, हम पिछले स्लाइड्स में देखे थे कि लिनोजोलिड का डोज 600 मिलीग्राम है, बट इन विच केस सिनेरियो वी कैन रिड्यूस द डोज ऑफ लिनोजोलिड। ओके, if linezolid 600 milligram can't be continued because of grade 3 toxicity up to 9 weeks, the regimen is declared as failed. अगर हम किसी केस में 600 मिलीग्राम लिनेजोलिड 9 हफ्तों तक नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ ग्रेड 3 टॉक्सिसिटी, रेजिमेंट को फेल कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। द डोज रिडक्शन ऑफ लिनोजोलिड टू 300 मिलीग्राम कब किया जाता है? आफ्टर 9 वीक्स हम 300 मिलीग्राम का डोज कर सकते हैं, बशर्ते 9 वीक्स तक 600 मिलीग्राम चल चुका हो। ओके, एंड इफ द डोज ऑफ लिनोजोलिड इज रिड्यूस टू 600 मिलीग्राम, रेजिमेन हैज़ टू बी एक्सटेंडेड अप टू, सो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे ना 26 या 39, 26 या 39, तो अगर लिनोजोलिड का डोज 300 मिलीग्राम कर दिया गया है आफ्टर 9 वीक्स, देन वी विल डिक्लेयर द रेजिमेन एज वी विल एक्सटेंड द रेजिमेन अप टू 39 वीक्स। ओके, सो इट इज़ अप टू द लिनोजोलिड का डोज के ऊपर है कि हम उसको 26 वीक्स देंगे या 39 वीक्स देंगे। सो whenever there is drug sensitivity results are available, then only we can change the BPaLM regimen. Since bedaquiline, linezolid resistance are low in India, okay, and pretomanid is already a new drug, so it is recommended that BPaLM regimen should be the treatment of choice irrespective of the baseline drug sensitivity of these drugs, because bedaquiline and linezolid resistance are already low and pitominid is a new drug. So whenever only the drug sensitivity test results come, then only we will change the regimen. Moxifloxacin is a part of BPaLM regimen, okay, then full course of BPaLM regimen should be considered even if the patient is resistant to moxifloxacin. moxifloxacin रेजिस्टेंस है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अपन BPaLM रेजिमेन कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, वी हैव टू कंटिन्यू, बट इफ़ द पेशेंट इज़ रेजिस्टेंट फ्रॉम आइदर bedaquiline और linezolid और pretomanid, then we have to change the regimen. So follow up, when to follow up the patient? So patient must be follow up monthly, okay, up to 26 weeks. It can be extended when we are extending the treatment, whenever we reduce the dose of linezolid due to toxicity, then only we will follow the patient up to 39 weeks. Okay, what we will do in the follow up, we will do CBC in day 15, day 30, then after monthly till 6 months. Okay, till 6 months we will do follow up. If the patient treatment is up to 9 months, then we will continue this CBC, ECG, both things up to 9 months. Okay, visual acuity, when we will do visual acuity and color vision test, we will do it in week 9, 13, 26, and if clinically there is indication, then we will do frequent vision testing, smear microscopy with culture at
cultural at the culture and drug sensitivity test lab. यहाँ पे हम स्मीयर माइक्रोस्कोपी करेंगे. Culture, when we will do culture, we will do culture from months 2 onwards, and cultural result of month 4 and later are positive, then we will do culture again. If the culture is positive after month 4, then we will do culture again. Then only we will say the patient is either failed in treatment or culture is negative. Okay. Drug sensitivity test, what we will do? We will do NAT, we will do first and second line probe assay. NAT we will do to determine whether is AMDT or XDR patient. Then for first line and second line probe assay, we will do it for levoflox, moxifloxacin, amoxicillin, each 2 minutes, and liquid culture drug sensitivity test. If the culture is positive at end of the month 4, we will do that. Okay. We will do urine pregnancy test if the patient in female and in the reproductive age group. And we will do chest x-ray and liver function test at the end of 3 months and at the end of treatment, or as and when clinically indicated. Serum electrolytes for sodium, potassium, magnesium and calcium as and when clinically indicated. And if there is any QTCF prolongation. Ophthalmic examination, already said, whenever it is clinically indicated. Surgical evaluation after culture conversion. Long term follow up, after when do we follow up? After the completion of treatment, we will follow up after 6 months, 12 months, 18 months and 24 months after completion of treatment. Okay. Follow up monitoring. Monitoring neuropathy symptoms and HB levels may help in guide the linezolid dosing. Linezolid causes neuropathy and HB levels goes down due to starting of this linezolid. So if there is a decrease of 10% or more, if the hemoglobin at the starting of the treatment is 10, and after follow up after 1 month, we will 1 month 4 weeks, we will get HB 9 or less, then it is sign of hematotoxicity. Okay, or myelosuppression. We are going there is a side effect of linezolid of myelosuppression. So it is an indication of change in linezolid dosing, or we have to label the patient as failed. Okay. So management of patient found to be ineligible for BPaLM regimen or BPaL regimen. Okay, so we have already seen 3 types of treatment for MDR and XDR. So first is BPaLM. Then if the patient failed or cannot be initiated on BPaL regimen, or the patient is labeled as failed, then we will go for 9 to 11 months shorter oral regimen. And even if the patient cannot be continued on shorter oral regimen, then we will go for 18 to 20 months longer oral MDR or XDR regimen. Okay. Whenever there is a difficulty in treating any patient, then district TB core committee must be consulted. Thank you for listening to the lectures, and we have made many lectures including screening. We have continuing posting our lectures on communicable and non-communicable diseases. We will also post part 2 of this lecture and treatment algorithm for treatment as well as diagnostic algorithm for TB in separate videos. Please do subscribe and like if you find this video useful. Thank you very much.